गुड आफ्टरनून. हाय अर्पिता, हाय मानसी. कैसे है बच्चा लोग? बढ़िया, गुड, ओके. तो अभी तक अगर आपने नीट एलेक्सर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करिए बिकॉज यू आर गोइंग टू मिस द अपडेट्स. Because tomorrow Sachin sir and I am taking a wonderful session on which are the best books for the NEET preparation. And if you haven't watched the previous session, that strategy, how to get 360 on 360, वो आपको ज़रूर देखना है, right? To get 360 on 360. Hi, Dr. Priyank. Hello. कैसे हैं? बढ़िया, गुड. चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन. तो आज का सेशन किसके ऊपर है? We have female sex organ, gynoecium. We'll be talking about the gynoecium. Hi Prerna. Okay, so I have got some beautiful slides for you people so that you understand the concept of pistil, carpel, style, stigma, ovary very nicely. बहुत ही बढ़िया slides, बहुत ही beautiful slides में आप लोगों के लिए लाई हूँ. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करें बच्चा लोग. ओके, सो मैं कौन हूँ? मैं हूँ आपकी अपनी स्वाति बत्रा, MSc in Botany, Delhi University topper, and I have mentored more than 250,000 students this year 23. I have produced Delhi topper AIR 13. Okay, and next year probably AIR 1. ओके, सो फीमेल सेक्स ऑर्गन की हम बात करने वाले हैं बच्चा लोग. फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनोशियम. योर फेवरेट टॉपिक प्रेरणा? ऑल राइट, प्रेरणा का फेवरेट टॉपिक है, मेरा भी फेवरेट टॉपिक है, राइट. चलिए, तो फेवरेट टॉपिक से मेल सेक्स ऑर्गन भी फेवरेट टॉपिक होता है बच्चों का, पॉलन ग्रेन्स, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो फर्दर. यस, तो एक बार इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए एक ब्यूटिफुल सा एनिमेशन देखते हैं. व्हाट इज द बटरफ्लाई डूइंग? ब्यूटिफुल सा. अच्छा लग रहा है आप लोगों को? नाइस. तो ये इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए पॉलिनेशन कैसा होता है, हाउ द इंसेक्ट्स आर डूइंग पॉलिनेशन. डू यू नो दिस फैक्ट कि अगर हम अर्थ से पॉलिनेटर्स को गायब कर दें, वैनिश कर दें, एक्सटिंक्ट हो जाएं, so we have to spend $117 billion per year. $117 billion we need to spend. $117 billion स्पेंड करने पड़ेंगे हम लोगों को. इतने पैसे हैं हमारे पास स्पेंड करने के लिए? राइट, नहीं है. That means that's why we have to conserve biodiversity. हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, हमें पॉलिनेटर्स को एक्सटिंक्ट नहीं होने देना, राइट. चलिए, ओके. Parts of a typical flower we have already done. We have done gynoecium, androecium, calyx and corolla. It's not corolla, it's corolla, right? Okay. So today we have to talk about gynoecium, which is the female reproductive whorl of the flower. And gynoecium consists of what? बताइए. Gynoecium consists of what? Gynoecium consists of carpel or pistil. In the earlier classes I have told you that what is the difference between carpel and pistil. So gynoecium के units हैं बच्चा लोग, gynoecium के units हैं आपके carpel और pistil. ठीक है, carpel or pistil, right? And each carpel or pistil consists of 3 parts. कौन से? Stigma, style and ovary. Each carpel or pistil has got 3 parts: stigma, style and ovary. So gynoecium can have one or more than one pistil or more than one carpel, right? So there can be monocarpellary condition or there can be polycarpellary or multicarpellary condition. Yes, very good Rajesh. You remember this? Very good. Hi Kanchan. Okay, excellent Rajesh. Very good. That's very nice that Rajesh is remembering that what is the difference between carpel and pistil. Good.
So beta ji, you have to review the previous lectures. After the lecture, this lecture is over. In the evening, please review the previous lectures, lecture 1, lecture 2, right? Okay. So you'll be having more command over this lecture. आज का lecture आपको समझ में आ जाएगा. But please recall androecium also and introduction also from the previous lectures. All right. Yes. Yes, Dr. Priyan, stigma style ovary, very good. So we have monocarpellary situation also. So monocarpellary means a single carpel is there, right? And we do have polycarpellary or multicarpellary condition, right? So monocarpellary we have in rice, we have in wheat, we have in mango, then we have in coconut, right? And then we have in matar, pea plant. Whereas polycarpellary, more than one carpels, the carpels can be free or the carpels can be fused. If the carpels are free, the condition is apocarpus condition, and if it is fused, syncarpus. So apocarpus condition you see in Micalia, and syncarpus condition, tell me, it's a question for you, I am putting a question mark. Polycarpellary syncarpus condition किस में नजर आएगा? Look at the next slide. देखिए, yes. So multicarpellary syncarpus condition you see in which plant? You see in, look at it very, very carefully, papaver, poppy plant, right? These are the diagrams from NCERT. And multicarpellary apocarpus condition you see in Micalia. So Micalia example I have already mentioned here, and syncarpus I asked you the question. Very good, Rajesh. Mustard also has syncarpus. In fact, all the families of NCERT in morphology like Liliaceae, China rose, right, Solanaceae, they have syncarpus condition, right? Okay. So gynoecium में carpel or pistil, it is equivalent to megasporophyll of gymnosperms, right? You have to note, it is not megasporangium, it is megasporophyll. Megasporangium नहीं है, megasporophyll है, right? The carpel or pistil, it is equivalent to megasporophyll, right? And each carpel or pistil it has, hi Ratnadeep bacha, so each carpel or pistil has stigma, style and ovary, and you know all these whorls are present on the thalamus or receptacle, right? Is that clear to everyone? Okay. So now we'll talk about what is stigma, what is style and what is ovary. So pistil or carpel, it has three parts: stigma, style and ovary. Now which is the receptive surface for the pollen grains, landing platform or receptive surface for the pollen grains? So receptive surface or landing platform for the pollen grains क्या है? Receptive surface क्या है बच्चा लोग बताइए? Receptive surface क्या है? Stigma, right? This is the stigma. Okay, it receives, we have very beautiful slides now. Receptive surface, landing platform, जहाँ पे pollen grains आके land करेंगे. Look at the diagram, look at the animation. It will be very, very clear how the pollen grains are landing on the stigma. Look how beautifully it is explained in this animation, right? See how the pollen grains are landing on the stigma, receptive surface for the pollen grains. Okay, style. Style is the elongated part, right, which is giving pathway to the pollen tube. So style, it gives pathway to the pollen tube, right? Style is the elongated part
which is giving pathway to the pollen tube, ताकि pollen tube आए, pollen grain germinate करेगा, pollen tube आएगी, pollen tube कहाँ से आएगी, उसका जरिया क्या है, क्या जरिया है, क्या वे है, style, right? Is that clear? Stigma style clear? Then the lower part, the basal part, lower को you can also call it as basal, the swollen part, lower bulging wala part, that is the ovary. As you can look here, this is the basal part, this is the swollen part, it is the ovary. Cool slides Priyansh, thank you so much. तो यहाँ पे the basal part is the ovary, the elongated part is the style, and the receptive surface is the stigma. Right? Now look at this diagram. It's also another beautiful animation explaining the structure of the pistil, how the carpels are there, how they are fused. Look at the diagram. Feathery stigma, it looks like bottle brush. Feathery stigma is there. Right? Okay. All right. Let's go further. Okay. Another beautiful animation we are having. How beautiful the slender, the long part, the style is looking. How beautiful the stigma looks, the blackish whitish part. How beautiful the stigma is looking. Yes, in carpus. Very good, Divya. Excellent. बहुत बढ़िया. When the carpels are fused, syn carpus ovary. Very nice. Okay. Look in other diagram, how the stigma is opening. Yes. Is the concept clear to you now? What is style, what is stigma, what is ovary, it's clear? Alright, so let's go further now. Okay. Now, ovary के अंदर what will be there? Ovule. Right? Ovary के अंदर ovule होगा. When I'll be cutting a transverse section of the ovary, what things will be there? Placenta, ovule. So now we will be looking into details of the ovary. We will talk about the ovary, right? Okay. Divya, clear hai? Yes, very nice. Petals नहीं, pistil रत्नादीप. Spelling गलत है. Pistil बच्चा लोग. Pistil करता है acceptance and rejection of the bone, not the petals, right बच्चा? Okay. तो आगे बढ़ रहे हैं अपन लोग. आगे बढ़ रहे हैं और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं. ओव्यूल क्या है, इंटीग्यूमेंट क्या है, माइक्रोपाइल क्या है, और कॉन्सेप्ट में डेप्थ में जाते हैं इस क्रिस्टल क्लियर करने के लिए. राइट? ओके, चलिए. टीएस कट किया ओवरी का. लुक एट दिस वेरी वेरी केयरफुली. दिस इज योर स्टाइल. राइट? अरमान अली बिल्कुल क्लियर हो रहा है. आई नो द कंसेप्ट शुड बी वेरी मच क्रिस्टल क्लियर. स्टिग्मा एंड दिस इज द ओवरी. जस्ट अ मिनट. यस, दिस इज द ओवरी. राइट? अब मैंने ओवरी का आई एम कटिंग अ ट्रांसवर्स सेक्शन. मैंने ओवरी का टीएस कट किया, ट्रांसवर्स सेक्शन. तो मुझे क्या नजर आया? सबसे पहले इनसाइड दिस चेम्बर, this chamber is called the locule or ovarian cavity. It is called the locule or, ठीक है, okay, ovarian cavity और locule, right? इसके अंदर क्या है? मटर छिलते हो तो छोटे छोटे वो ग्रीनिश वाले रह जाते हैं, उसको प्लासेंटा बोलते हैं. जो आप निकाल देते हो, जो खाते हो, that is the ovule. Right? ठीक है जी. Okay. So यहाँ पे look at this very very carefully. Suppose this magenta color में I am drawing the placenta, and on the placenta के ऊपर देखिए ये रेड कलर के बनाए हैं मैंने. दिख रहे हैं आपको? रेड कलर के क्या है बच्चा लोग? ये रेड कलर के बनाए हैं मैंने ओव्यूल्स. राइट? सो इस डायग्राम में बताइए, दिस इज द प्लासेंटा एंड दीज आर द ओव्यूल्स. राइट? सो दिस इज द प्लासेंटा. Look at this very very carefully. Which is placenta? This is placenta, right?
and these are the ovules. Clear? प्लासेंटा नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करता प्रियांश, अभी कंसेप्ट्स बहुत वीक हैं. नरिशमेंट करता है न्यूसेलस जो ओव्यूल में आएगा. प्लासेंटा, प्लासेंटा क्या है? कुशन लाइक प्लासेंटा ज़ूलॉजी में अलग है, बॉटनी में इट्स डिफरेंट. तो प्लासेंटा दे आर कुशन लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट? दे आर कुशन लाइक flattened structures to which ovules are attached, right? Cushion like flattened structures to which ovules are attached, जिसके ऊपर ovules attached हैं, right? Shall I go further बच्चा लोग? Placenta clear, ovarian cavity clear, ovules clear, right? ठीक है. मैम ने animation, yes. Ayush, I do have diagrams from Campbell, yes, because cell के अंदर भी I'll be definitely consulting Campbell when I teach plant physiology. I'll be taking up examples from Reven and Tazen-Zygo, because to understand NCERT you need to have the reference books. And tomorrow we have a session also, best books for Neet biology with Dr. Sachin Kapur. So आपको ज़रूर देखना है वो session, right? Clear है तीरथ? Good. Next. Can we move on to the basic structure of the ovule, please? So ovule, the alternative name of the ovule, it is, what is the alternative name of the ovule? It is megasporangium. Do not get confused between megasporophyll. Good afternoon, Sagar. Megasporophyll. Carpel or pistil is equivalent to megasporophyll. Ovule is equivalent to megasporangium. Now I want to see some likes. When I am teaching botany, I want to see some likes now. Some pizzas, some candies, some likes. And please share the session to all your academic groups, to your friends. मेरी पूरी क्लास प्लस पर भी है, बिल्कुल प्रेरणा. प्रेरणा कल भी मेरी बात हुई थी आपसे कि प्लस के अंदर डिटेल्ड कोर्सेज भी आ रहे हैं जिसमें वी आर स्टार्टिंग विद प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी. आयुष, आई विल बी टेलिंग दैट, यस, दैट कौन सी इंफॉर्मेशन आपको याद करनी है, कौन सी नहीं. अभी तो सारी याद करनी है आपको, सारी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. ऑल राइट, चलिए. सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल को हम लोग डिस्कस करते हैं. ओव्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम. ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, राइट. यहाँ पे मैंने आई हैव गिवन एन एग्जांपल ऑफ इनवर्टेड ओव्यूल. रुक, inverted ovule means when the micropyle is here, look here, यहाँ पे है micropyle. So normally micropyle is here, but now there is 180-degree curvature. So everything is written in my slides. You need not make notes. Look here, everything is written here. Every diagram, each and every comparison, everything is written for you people so that you download this. And everything will be available on Neet and Elixir Telegram channel. Everything is available. So आपको यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, राइट? आपको कॉन्सेप्ट को समझना है बस. कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करना है आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे. ओके, सो megasporophyll was carpel and pistil. Megasporangium is ovule. So normally the micropyle is here. But now here, this is an example of an anatropous ovule. I am taking the example of an anatropous ovule. Anatropous means inverted ovule which is showing 180-degree curvature. 180 डिग्री curvature है, राइट? यस प्रेरणा, 8 PM है. एंड यहाँ पे ऐसे ये देखिए curvature देखिए आप. सो माइक्रोपाइल इज अ पॉइंट, इट्स अ पोर where the integuments are absent. Now, as I told you in the previous lecture, what is integument? Integument is a protective covering around the ovule. They are the protective layers within the ovule, right? So, integument is a protective covering, and then the main body of the ovule, as you can see,
This one, the main body of the ovule. Yes, मुझे pizza पसंद है. The main body of the ovule is made up of nucellus. ये provide करता है nutrition. It's a mass of parenchymatous cells which has abundant food reserve. That is why a neat PYQ question. Which tissue is called nurse tissue? So nurse tissue is nucellus and nurse tissue का ploidy level क्या है? Nurse tissue का ploidy level है diploid. See, everything associated with ovule is diploid जब तक meiosis नहीं हो रहा बच्चा लोग. It concept ploidy level पे अगर question आता है तो फंसना नहीं है, क्योंकि ploidy level आप रट्टा नहीं मार सकते हो. आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा मियोसिस और माइटोसिस का. सारे प्लॉइडी लेवल, आई हैव लिस्ट ऑफ 45-50 प्लॉइडी लेवल्स, राइट? सो दैट वी कैन हैव इन द फॉर्म ऑफ क्लास. इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पोल्स, राइट? क्लास होगी स्पेशल क्लास के सारे प्लॉइडी लेवल जितने पॉसिबल, सारे प्लॉइडी लेवल जो आ सकते हैं उसका एक पोल करा देते हैं. एंड देन आई शेयर द लिस्ट ऑल्सो. I have approximately 100 to 200 ploidy levels which can be asked. उसके बाहर ploidy level आ ही नहीं सकता, right? Because one question generally the NEET asks indirectly or directly related to the ploidy level. Okay, all right. So ploidy level is diploid and nucellus, it provides nourishment because it has food reserve. And integument, it's a protective covering. So we can say integumented nucellus. Integumented nucellus is called what? Integumented nucellus is called megasporangium or ovule, right? Integumented nucellus is called megasporangium or ovule. Integumented nucellus को ही megasporangium या ovule बोलते हैं, right? I hope it is clear. So micropyle. Now let's come to micropyle and chalazal end. Micropyle is a pore, right, which is not surrounded by integument. It's a pore. यहीं से pollen tube enter करती है, right? So micropyle, it's a pore. It's an opening where the integument is absent and जिस end पे micropyle होगा, that end is called, what it is called? That end is called micropylar end. And opposite to that we have chalazal end. तो हमने पूरा NCERT का डायग्राम डिकोड कर लिया. एनाट्रोपस अगर 180 डिग्री 180 डिग्री कर्वेचर है. अभी एम्ब्रियो सैक की अपन लोगों को बात नहीं करनी. वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट एम्ब्रियो सैक क्योंकि अभी एम्ब्रियो सैक हमने डिस्कस ही नहीं किया. एम्ब्रियो सैक इज कमिंग इन द लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर, राइट? ओके, सो we have discussed about micropyle, chalaza. Only things we are left in the diagram. What is funicle? Funicle is the stalk of the ovule. All right. So what is funicle? Funicle, it is also known as funiculus. It is the stalk of the ovule, right? Stalk, dandi. Now you must be wondering, NCERT is mentioning the word hilum. Now you can see hilum. It's the point of attachment of the funicle with the ovule. So hilum is the point of attachment of funicle with the ovule. The point of attachment of funicle with the ovule. So if I ask a question, junction, okay, if I ask a question which was there in the NEET examination, तो NEET का question ही हम NEET का PYQ यहाँ पे ले लेते हैं. NEET का PYQ, which structure in this ovule represents the junction between ovule and funicle? Can you tell me? The junction
the junction between ovule, 2019 का question था, the junction between ovule and funicle, and that structure, please answer in the chat box, that structure is called hilum. And you can see in the diagram that in the anatropous ovule, the hilum is lying very close or at the side of micropyle. Is that clear? Is green color visible to you, बच्चा लोग? Green, red, white color, बच्चा लोग clear है? आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा? Clear है ना बच्चा लोग? समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है? सेशन को लाइक करिए भाई. Please like the session. I am waiting. Yes. हाइलम की स्पेलिंग सही लिखो भाई. हाइलम. दीपू रतलानी, अर्पिता. दीपू ने ठीक लिखा है, अर्पिता. हाइलम की स्पेलिंग तो ठीक लिखो. ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. यस, क्लियर है. चलिए तो आगे चलते हैं. टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स. नाउ यू नो what the ovule is. You have understood the basic structure of the ovule. Now you tell me, now there are two types of ovules on the basis of the development of the nucellus. Now we know what is nucellus. Nucellus is a parenchymatous nutritive tissue which provides the nourishment, which provides the nutrition. So we have two types of ovules, tenuis and crasi. Tenui nucellate में the nucellus is poorly developed. टीनुई का मतलब ही होता है पुअर. न्यूसेलस इज पुअरली डेवलप्ड इन टीनुई न्यूसिलेट ओव्यूल, whereas in quasi nucellate, obviously बात है, when there are two contrasting terms, suppose exarch endarch, centripetal centrifugal, cis trans, I always prefer to memorize one thing. If I know टीनुई न्यूसिलेट इज पुअरली डेवलप्ड, तो एग्जाम में अगर क्राजी आएगा तो क्राजी मीन्स इट्स वेल डेवलप्ड. व्हाई टू मेमोराइज बोथ द थिंग्स? बोथ द थिंग्स इफ आई मेमोराइज, इफ आई नो एक्सार्च कंडीशन क्या है तो एंडार्च विल बी ऑपोजिट ओनली, राइट? ओके, सो टीनुई एंड क्राजी इट्स क्लियर टू यू, पुअरली एंड वेल डेवलप्ड. ऑल राइट, सो नाउ देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ ओव्यूल्स also on the basis of what number of integuments are present. Unitegmic ovule, bitegmic ovule, right? I hope everybody is enjoying the session because sexual reproduction pay this chapter, sometimes it carries the weightage of 3 to 4 questions. One on male sex organ, one on female, one on apomixis, one on pollination. So you need to memorize each and every concept very, very clearly, right? Okay. So let's go further now. And what do you mean by unitegmic ovule? Unitegmic ovule के अंदर one integument is there, right? Bitegmic में 2 integuments are there and angiosperms में unitegmic भी है, angiosperms में bitegmic भी है, angiosperms में, right? In fact most common ज़्यादातर gymnosperm. तो जिम्नोस्पर्म के अंदर what do we have? जिम्नोस्पर्म्स में ज़्यादा commonly we see unitegmic. तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर most common is, suppose they ask you which is the most common one in angiosperm. So the most common one in angiosperm, this was again a neat PYQ question. The most common one, it is the bitegmic ovule, right? Is that clear, bachcha log? Okay, yes. Okay, next, tritegmic. Tritegmic, we have 3 integuments. This is also seen in some of the angiosperm, but it's very rare. Ategmic. Ategmic में कितने integument होंगे? Ategmic में होगा 0. 0 integument होगा, right? So these ategmic and tritegmic, hi Poonam, that's also seen, right? But it is very, very rare. So tritegmic you see in lychee, you see in asphodilus. Yes, very good, Dr. Priyansh. Lychee, asphodilus,
right? This you see in ategmic, you see in santalum, that is chandan, sandalwood and olax, right? So these are also seen in various plants, but the most common that you see it's bitegmic, right? Okay. Can I go further now? Shall I go further? All right, बच्चा लोग. Now we have types of ovules. अभी हमने 180 degrees पे कौन सा कवर किया था अभी हमने? Types of ovules on the basis of curvature. अभी कौन सा एक किया था curvature में? 180 डिग्री curvature था. बताइए अभी जल्दी से फटाफट से बताइए बच्चा लोग. Types of ovules on the basis of curvature कौन सा किया था? ना सैंटलम और लैक्स की बात नहीं कर रही मैं. अभी हमने 180 डिग्री कर्वेचर पे कौन सा किया था? एनाट्रोपस ओव्यूल, राइट? एनाट्रोपस. हाय, गुड आफ्टरनून अफाक. ओके, चलिए. सो आई हैव क्रिएटेड अ पीडीएफ फॉर ऑल ऑफ यू, बट द ओनली इंपॉर्टेंट ओव्यूल you have to discuss, we have to know, it is anatropous that we have already discussed. But if you want to gain more information about atropous, amphi, hemi, campylode, sarcino, then you can look at this PDF. So I'll be uploading it on the Telegram channel, Neet Elixir, right? But the only thing that will be asked in the Neet examination, so Neet examination में anatropous ही आएगा exam में, which is the most common, जो मैंने बता दिया अभी आपको, that this is the most common one, right? कौन सा? Anatropous, जिसको हमने inverted और resupinate ovule बोला. Rest if you want to go through, you can go through the PDF. I'll be uploading it, right? Okay. Now, special structure, again, neat PYQ question. There was a question on aril. What is the special structure relative to ovule? Yes, very good, bacha. Tirath Raj, Poonam, Divya, very nice. Aril. Now we know that generally the angiosperms, they are having bitegmic ovule. That means they are having two integuments. Yes, ये पता है हमें दो integuments होते हैं बच्चा लोग, right? But now what is the special structure? What is the edible part in lychee? Look at this simplified diagram very, very carefully, right? We have generally two integuments, right? हमारे पास एक ovule है, राइट? इस ओव्यूल में जनरली कितनी इंटेग्यूमेंट्स हैं? दो. बाइटेग्मिक ही कॉमन होता है. बट अगर फ्यूनिकल में से, इफ फ्रॉम द फ्यूनिकल, लुक एट द डायग्राम वेरी वेरी केयरफुली, इफ फ्रॉम द फ्यूनिकल से देयर इज एन आउटग्रोथ which is covering the entire ovule. So this outgrowth, this is known as, it is known as what? It is known as aril, and it seems that it is surrounding the entire ovule. That is why two integuments were already there, and third, that is aril, it is the third integument. So aril, it is the outgrowth from the funicle which is covering, क्या cover कर रहा है? Which is covering the entire ovule, जो entire ovule को cover कर रहा है. I hope it is crystal clear. And surprisingly, what is the edible part in lychee? It is the aril, right? These are some of the plants I have shown which show presence of aril. So beautiful diagrams. Aril is the edible part in lychee. So this I will mark. जहाँ भी बच्चा लोग question आ सकता है, वहाँ आपको PDF में marked होगा कि this is a neat PYQ. Why? जब सारे PYQs आपको lecture में notes में ही cover होंगे. And now when you solve the questions, आपको सारे क्वेश्चंस आते होंगे. सो इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि यार सारे जो 10 साल में क्वेश्चन आए वो तो हमें आते हैं. इनफैक्ट 10 साल के पहले वाले क्वेश्चन भी, 2005 के पहले वाले भी हमें आते हैं. सो इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, बिकॉज आपको पता है नीट एग्जामिनर का एक माइंडसेट होता है कि अगर वो एरल वाले पार्ट से बार बार क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन उसके आसपास ही रिवॉल्व करेगा मॉर्फोलॉजी में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में.
कहीं पे आसपास, मतलब उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन होगा, सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन होगा। इसीलिए हमें PYQs जानने बहुत ज़रूरी हैं कि क्या PYQs हैं, राइट। तो दिस टाइम मे बी they have asked what is the edible part in lychee, right? So aril is the edible part in lychee. Next time they must ask, or they might ask that aril represents which integument, first integument, second or third. So edible part in lychee is the aril, right? Okay. Now very very important concept, megasporogenesis and megagametogenesis. बहुत से बच्चे मार खा जाते हैं इस कंसेप्ट के अंदर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, क्रिस्टल क्लियर, सिंप्लीफाइड, मेरा हैंड रिटन डायग्राम के अंदर। ध्यान से देखिए, लुक एट इट वेरी वेरी केयरफुली। वी हैव दी ओव्यूल, राइट, हमारे पास ओव्यूल है, इसमें पूरा लेबल करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द माइक्रोपाइल, दिस इज द चलाजा, and the main body of the ovule, it is made up of nucellus, right? ये भी फंडा क्लियर है हमें। Now पूरे nucellus में से one cell which has dense cytoplasm and prominent nucleus, dense cytoplasm का मतलब क्या है, जिसके अंदर खूब सारे सेल ऑर्गेनल्स है। तो पूरे nucellus में से, out of the entire nucellus, only one cell, and that one cell is present towards the micropylar end, as you can see. Very 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 important question. इस एक सेल को क्या बोल रहे हैं? MMC, megaspore mother cell, and this cell is having dense cytoplasm and prominent nucleus. क्लियर है? वेरी गुड। सो डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है? देखो कहीं बच्चा लोग में एनाटॉमी है, मॉर्फोलॉजी, कहीं भी व्हेनेवर आई एम यूजिंग द वर्ड डेंस साइटोप्लाज्म, दैट मीन्स लॉट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स, राइट? ओके, सो मेगास्पोर मदर सेल इज हैविंग dense cytoplasm, right? Dense cytoplasm and what? Prominent nucleus. Can anybody tell me what is the ploidy level of megaspore mother cell? Ploidy level of megaspore mother cell, 2n or n? Yes, it is 2n. So this megaspore mother cell, it will undergo meiosis. अभी मेरे पास एक एनिमेटेड डायग्राम भी है, इसमें दिखाऊंगी आपको 4 मेगास्पोर कैसे बनेंगे, राइट? सो 4 megaspores will be formed. This process is called megasporogenesis. Now, micropyle and chalaza. Micropyle wale 3 megaspores, these are the 4 megaspores. Now we can see the enlarged diagram outside. These are the 4 megaspores, 1, 2, 3, 4. Micropylar wale 3, they are going to degenerate. Chalazal megaspore will be functional. So chalazal megaspore will be functional. So this was about megasporogenesis. That means megasporogenesis involves only one meiosis. There is no mitosis in megasporogenesis. megasporogenesis में बच्चा लोग कोई माइटोसिस नहीं है। डीजेनरेट क्यों होते हैं? मेगा मतलब बड़े, लड़ाई होती है आपस में, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, एक ही को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाता है। दिस इज वन ऑफ द हाइपोथेसिस, नेक्रो हार्मोन हाइपोथेसिस. So this has not been proved yet that why the megaspores degenerate, but this which I am explaining, it is one of the hypotheses which is given in the Campbell, that how, why the megaspores are degenerating, right? Okay, so the 3 megaspores, they degenerate.
फंक्शनल मेगास्पोर चलाजल वाला है, लेकिन मेगास्पोर मदर सेल माइक्रोपाइलर एंड पे बन रहा है. आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर. मेगास्पोर मदर सेल माइक्रोपाइलर एंड पे बन रहा है, लेकिन फंक्शनल मेगास्पोर चलाजल साइड वाला है. राइट, क्लियर है बच्चे? दिस इज मेगास्पोरोजेनेसिस. नाउ वन फंक्शनल मेगास्पोर. अब मेगागैमेटोजेनेसिस की बारी आ रही है. वन फंक्शनल मेगास्पोर कौन सा वाला? चलाजल वाला. इट अंडरगोज 3 माइटोसिस. तो यहाँ पे 3 माइटोसिस होंगी टू फॉर्म व्हाट? फीमेल गैमेटोफाइट, और उसे बोलते हैं एम्ब्रियो सैक. राइट? So one functional chalazal megaspore, it will undergo 3 mitosis to form female gametophyte और embryo sac. इसी female gametophyte के अंदर female gamete बनेगा. That's why the process is known as megagametogenesis. So हम बोलते हैं formation of किसका? Formation of female gamete. Formation of female gamete. फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन को, या एग के फॉर्मेशन को, या मेगा गैमीट के फॉर्मेशन को व्हाट डू यू कॉल इट एज? मेगा गैमेटोजेनेसिस. राइट? सो मेगा गैमेटोजेनेसिस इन्वॉल्व्स 3 माइटोसिस and megasporogenesis involves 1 meiosis. Right? Yes, clear हो गया फंडा सबको. Now, अभी हमें एनिमेशन से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखना है. ये कैसे हुआ है? देखिए जी, ये देखिए. सबसे पहले न्यूसिलस में क्या बनेगा बच्चा लोग? न्यूसिलस में बनेगा मेगास्पोर मदर सेल, है ना? एंड देन मेगास्पोर बन गए, देखो 4. राइट? 3 are going to degenerate, 1 will be functional. राइट? क्लियर है? ये देखिए आप, मेगास्पोर मदर सेल, देखिए एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन दिख रहा है. दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस कि 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्स एम्ब्रियो सैक कैसे बनेगा, ये अभी डिस्कस करने वाले हैं हम. ओके, सो दिस इज 8 न्यूक्लिएट 7 सेल. पोलर न्यूक्लियाई क्या होता है? एंटीपोडल्स क्या होता है? दिस ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस. दैट व्हाट इज एक्सेल, what is synergid, what is antipodals, we are going to discuss. Right? No, for yes, Mrinal, for IBO Olympiad, yes, you have to refer Campbell. And you can also ask me the doubts also, I'll provide this. You can also ask me the doubts related to Olympiad, no problem. Okay, so now let's discuss how the embryo sac is formed. एक बार एम्ब्रियो सैक देख लें कैसे बना है. ये अभी हमने बात कर ली कि मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या हुआ था. मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर मदर सेल बना. राइट? मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस करके 4 मेगास्पोर बनाए. 4 मेगास्पोर में 3 विल डीजेनरेट, 1 इज फंक्शनल. एंड व्हाट डू यू सी? अ लीनियर टेट्राड बनाया, जो अभी हमने टेट्राड बनाया था, अ लीनियर मेगास्पोर टेट्राड, जिसमें से दिस इज माइक्रोपाइलर, दिस इज चलाजल, सो दिस विल बी फंक्शनल एंड दीज 3 आर गोइंग टू डीजेनरेट. माइक्रोपाइलर वाले दे विल डीजेनरेट and only 1 chalazal megaspore will be functional, and that chalazal megaspore, it will undergo 3 mitoses to form the embryo sac. Right? Clear है? ये देखिए. So ये फंडा clear है. ये सारे डायग्राम देख लिए हमने. So now we will be discussing how the embryo sac is formed. Okay. So before starting the development of embryo sac, I would like to give a concept. So there was a scientist called P. Maheshwari, Panchanan Maheshwari, father of Indian embryology. Panchanan Maheshwari, father of Indian, भगवान है. You know,
दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस कॉलेज में मैं थी, बॉटनी डिपार्टमेंट में थी, मास्टर्स कर रही थी मैं अपनी, तो पंचानन माहेश्वरी की इतनी बड़ी पिक्चर होती थी बॉटनी लेक्चर थिएटर में, और टीचर बोलती थी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता होता तो आइज बंद करो, पंचानन माहेश्वरी जी को याद करो और वो क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे आ जाएगा, बिकॉज he is considered as the god of embryology. He has done so much work. He has contributed so much towards embryology that he is considered as the god of Indian embryology. So P. Maheshwari discovered 3 different types of embryo sac on the basis of how many megaspores are involved in embryo sac development. As per NCERT, तो हमने यही पढ़ा कि 4 मेगास्पोर में 3 रेस्ट इन पीस हो गए और 1 फंक्शनल है। बट ऐसा भी होता है कभी कभी इन रेयर केसेस वेयर 2 मेगास्पोर्स आर फंक्शनल और ऑल द 4 मेगास्पोर्स आर फंक्शनल, मतलब लड़ाई नहीं हो रही है उनकी आपस में, ऑल द 4 आर फंक्शनल, बट एज पर एनसीईआरटी yes, only one is functional. But the god of Indian embryology, P. Maheshwari, he discovered 3 different types of embryo sac on the basis of how many megaspore nuclei are involved. That is monosporic, bisporic and tetrasporic. Right. बिल्कुल दिव्या, सेल वॉल फॉर्मेशन की बात हम बच्चा करेंगे आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ एम्ब्रियो सैक बच्चा, राइट? एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन का फंडा कल क्लियर करके देन वी विल स्टार्ट। मोनो, एक, स्पोरिक, स्पोर, जब एक मेगास्पोर फंक्शनल है, व्हेन 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल, 3 रेस्ट इन पीस हो गए, देन इट इज मोनोस्पोरिक। When 2 megaspores are functional, 2 megaspore functional हैं, when 4 megaspores are functional, then it is tetrasporic. I hope it is clear, right? 1 megaspore functional monosporic, 2 megaspore functional bisporic, 4 megaspore functional tetrasporic. Tetra. So bi and tetra, they are rare as per NCERT. मतलब अगर एग्जाम में बाय और टेट्रा को पॉइंट आउट करते हुए क्वेश्चन आ रहा है तो आप बाय और टेट्रा के टर्म्स में आंसर करोगे, बट इफ इन द नीट एग्जामिनेशन इट इज नॉट मेंशनिंग एनी एम्ब्रियो सैक, so you are going to mark your answer with respect to monosporic type of embryo sac, and that is the most common type of embryo sac, that is monosporic. Right बच्चा, is that clear? आ गया बच्चा लोग समझ में? मोनो बाय टेट्रा फंडा क्लियर हो गया? ऑल राइट, ठीक है, ओके। प्लम्बैगो प्लम्बेजलम रीनल हम लोग बात करेंगे बच्चा कि टेट्रास्पोरिक के कितने टाइप्स हैं, बाइस्पोरिक के 2 टाइप्स हैं, बट बाय एंड टेट्रा वी नीड नॉट टू गो इनटू द डिटेल्स बिकॉज दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के सिलेबस पे मोनोस्पोरिक ही है, राइट? ओके, सो मोनोस्पोरिक की भी कैटेगरीज होती हैं, मोनोस्पोरिक की भी कैटेगरीज हैं, पॉलीगोनम, उनोथीरा, बट आज हम लोग पहले क्विक रिव्यू यहीं तक रखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ओव्यूल पढ़ा, हमने कार्बल पढ़ा, हमने मेगास्पोरेंजियम पढ़ा, ओव्यूल के टाइप्स पढ़े, नंबर ऑफ इंटेगुमेंट्स में यूनी, बाय, ट्राई, एटेगमिक, हमने टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर, जिसमें एज पर एनसीईआरटी सिर्फ एनाट्रोपस ओव्यूल की बात करनी है, राइट? We have also studied types of ovules according to the number of integuments and also according to the nucellus development, that is quasi-nucellate and tenuinucellate. Tenui में poorly developed and quasi में well developed. And mono by tetra की details में, especially mono में polygonum type of embryo sac, that we are going to discuss in the next class, right? Is that clear बच्चा लोग? तो like करिए सेशन को पहले और शेयर करिए जितने भी फ्रेंड्स को एकेडमिक ग्रुप्स में आप सेंड कर सकते हैं, राइट? ओके, आई होप यू लाइक द सेशन बच्चा लोग। ओके, तो अगर अभी भी आपने अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड नहीं करी है बच्चा लोग तो डाउनलोड करनी है। स्पेशल क्लासेस कैसे करेंगे आप? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, नीट एलिक्सर, इसका पीडीएफ आपको वहीं पे अपलोड होगा। एंड अगर अभी भी अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो बच्चा लोग अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करिए, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन, क्रिस्टल क्लियर हो गया अपने आज?
थैंक यू सो मच। नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा क्लासेस का, क्योंकि आज स्पेशल क्लासेस भी हैं खूब सारी प्लेटफॉर्म के ऊपर, राइट। ओके, ऑल राइट। तो अभी आपको वो शॉर्ट ब्रेक मिलेगा। शॉर्ट ब्रेक कितने मिनट का? 5 मिनट्स का, क्योंकि 3 PM पे कौन आएंगे? डॉक्टर सचिन कपूर, है ना। क्लास मिस नहीं करना बच्चा लोग, क्योंकि लाइव क्लास का अपना ही मज़ा है, ठीक है। तो विदा लेते हैं, फिर विदा ले लें, ठीक है। तो विदा लेते हैं हम और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और मैं हूँ आप ही की ही